So continuing with the topic, last lecture तक हमने देखा था what is regular language, how can we use pumping lemma for proving that the language is not regular, and so. Now we are studying regular expressions. Like regular language and expressions में difference ये है that regular expressions are basically formed, or say you can represent them as a set in algebraic form. प्लस ऑपरेटर्स या जो भी हम नॉर्मल algebraic expressions में यूज करते हैं वही चीज हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में वी कैन यूज इट. इसको रीड करने का तरीका डिफरेंट होगा बट यू कैन रिप्रेजेंट देम इन दैट फॉर्म. सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. It says any terminal symbol, that is epsilon, sigma, or say empty symbol or phi symbol, every symbol is a regular expression. लास्ट इसमें हम सिर्फ ऐसा जो टर्मिनल सिंबल्स था A, B and 0, 1 उनको रेगुलर लैंग्वेजेस में यूज करते थे या रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं ऐसा मानते थे. बट इन रेगुलर एक्सप्रेशन इन RE every symbol is basically a regular expression. The union of two RE is also a RE. जो हमने properties for regular language what we have seen, similar properties are applicable for regular expression as well, which says the union concatenation of RE, यानी दो सेट्स है R1 and R2, if they are regular then the union of them or the concatenation of them is also regular expression. And the iteration or the closure of RE is also RE, वो भी हमने देखा था that if we have a set A then the closure of it, that is A star, will also be a regular expression. और ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर सिग्मा जो हमें मिलता है प्रिसाइजली, यानी ओवरऑल जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज वी that is what we get when we apply the above rules. So see over here, if we have two regular expressions R1 and R2, then the union of them is also regular expressions. Similarly, the concatenation of them is also a regular expression. And we have a set R which is a regular expression. Then the R closure is also a regular expression. So first we'll understand and see the basics of what is a regular expression, what does it mean, how to read it or how to write it. So starting with the first part, ये जो फॉलोइंग सेट्स दिए हैं उसे हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस में डिफाइन करना है. सो लेट्स से दिस आर द सेट्स हैविंग सिंबल्स 0, 1 and 2. So it means that we can have a regular expression using these symbols out of which it can contain strings having 0 or 1 or 2, anything. Similarly, this is the second set. Now this is nothing but an epsilon sign. You can use this sign or you can use this sign. It is one and the same. Because different books uses different symbols, so I don't want you to get confused when you refer to them. So I have tried using both at times. ना अब आप देखोगे कि यहाँ पे जब कॉमा था और रेगुलर एक्सप्रेशन था तो हमने यूनियन करने के लिए या कंबाइन लिखने के लिए वी यूज्ड प्लस साइन. हियर आई एम नॉट यूजिंग एनी प्लस साइन बिकॉज इट इज एन एम्प्टी सिंबल, epsilon symbol. So epsilon into that number or set into that symbol, usually if you see then that is the regular set itself. यानी अगर पहला सिंबल एप्सिलन होता भी है तो उसमें सेट से या रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू डोंट राइट दैट एप्सिलन वैल्यू. दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ प्लस साइन. नेक्स्ट इज दिस, अगेन ये इसके तरह ही है, जस्ट अल्फाबेटिकल वैल्यूज है. सो दिस रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग्स कैन बी दिस प्लस दिस और BBA. Now, if you look at this example very carefully, you will understand that we are having epsilon, then it is 0, 0, 0, 0, 0, 0 and so on. So ये कब फॉर्म होता है? मैंने कहा था कि एक ही सिंबल का any number of combinations you can take when we have a closure. यहाँ पे फुल क्लोजर क्यों है? क्योंकि एप्सिलन भी इंक्लूडेड है एंड एप्सिलन इज इंक्लूडेड व्हेन वी हैव अ फुल क्लोजर. सो वी राइट इट एज 0 स्टार. ये हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में किया था, स्टार्टिंग के वीडियोस में किया था, इफ यू रिमेंबर. इफ नॉट प्लीज गो टू दैट properly. When we have clean closure, we say when we have full closure, we have a symbol जिसका हम कोई भी combinations, कितना भी combinations यूज कर सकते हैं, यानी वही symbol हम कितने ही बार repeat कर सकते हैं including epsilon value. So when we have epsilon value and we have combination of the same symbol itself, then we term that symbol as a closure. So because we are having epsilon value over here and we are having 0 का combination over here, so it is called as 0 closure. Now if you see this example, ये और ये almost same है. Why I am telling that it is almost same? Because here we have an epsilon value, here we are not having an epsilon value.
Now, because it is not an epsilon value, it cannot be a full closure. But if you see again this one, triple one, four ones, ये जो symbol है एक ही symbol का continuous combinations हमने बनाया है. So it is called as one closure without epsilon. So with epsilon we use star for closure, without epsilon we use plus sign for closure. क्यों? क्योंकि इसमें epsilon values नहीं है. So make sure you remember this difference. With epsilon we always use a star for closure. Without epsilon values we are using plus closure. क्योंकि full closure के लिए epsilon values include होना बहुत जरूरी है. Next we have a set of strings over alphabet 0 1 starting with 0. So इसका regular expression कैसे होगा कि कोई भी symbol 0 और 1 से accept हो सकता है पर वो symbol 0 से start होना चाहिए. So we are writing regular expression as 0 because it says the string should be starting with 0 followed by any number of 0 and 1. So it can be 0 or 1. I already mentioned कि ये दोनों ही यूज करना होता है या दोनों में से कोई भी एक यूज करना होता है तो हम और के लिए यहाँ पे प्लस साइन लेते हैं. So it says 0 or 1 can be followed but it should start with 0. So we are starting with 0 followed by any number of 0 and 1, that is closure. यानी आप 0 1 का कोई भी पैटर्न कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो. Similarly, the next example is a set of string over alphabet 0 1 ending in 1. So regular expression is starting अब 0 से करो 1 से करो combination से करो any number of combination but it should end in 1. तो end in 1 मतलब क्या होगा 0 plus 1 closure because any number of 0 1 combination is allowed but the ending should always be with 1. So this is the way to write. And the last one we have is the set of strings over alphabet AB starting with A and ending in B. तो हमें पता है कि A से start होना चाहिए B पे खत्म होना चाहिए. So A से start किया B पे खत्म किया. In between A या B कोई भी combination आए किसी भी pattern में आए it does not matter. So we write A or B closure. यानी any combination of A B is accepted. The condition is starting with A and ending with B. So this is how we try to read and write the regular expressions. Now, the next topic what we see is nothing but the identities of regular expression. अब ये जो identities है ये आपको by heart करनी है because only then you will remember जब भी हम आगे solve करेंगे regular expressions के sum ये identities बहुत use होगा. The identity is very simple. Please make sure by hook or by crook you by heart it, and when you sit and solve sums you must have a separate page or a book or a note written somewhere where you have all these identities so that you understand which identity has been used, and when you solve it by yourself you should know which identity you should be using when you solve that sums. So designing an expression, will continue that in the next video.